बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने पिछले लेक्चर से हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट को एक नए पर्सपेक्टिव से पढ़ना शुरू किया है, जो कि ह्यूमन राइट्स बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट है। आज के इस लेक्चर का टॉपिक जो है वो स्ट्रैटेजीज़ फॉर ह्यूमन राइट बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट है, जिसमें हम वो उन तमाम स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ेंगे जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बेस करती हैं और कैसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। Human rights values and principles may be followed in several ways in community development practice. In seeking to achieve social change, equality, and social justice, it is necessary and important to include and address all the three types of rights. इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बहुत तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। वो थ्री राइट्स कौन कौन से हैं? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स। इन तमाम राइट्स को हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन के नाम से पढ़ा था, या नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स के नाम से भी पढ़ा था। These all rights are an interdependent and integrated way for in which community development practice all human rights are closely connected. The conscious use of human rights values and principles help to shift the focus from individual to community needs to individual and community rights। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हम राइट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम अपने फोकस को इंडिविजुअल कम्युनिटी नीड्स से शिफ्ट करके इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स पर शिफ्ट करते हैं। Such a value orientation and application of associated principles help to focus on claim and invoke the duties and responsibilities of the state and other social and economic institutions to address claims of their people and communities. It also helps to move from charity, philanthropy, and state benevolence approach to structural change to serve rights holder rather than passive beneficiaries. यानी ये आपका जो फोकस है वो शिफ्ट करती है फ्रॉम चैरिटी एंड फिलैंथ्रोपी से टूवर्ड्स राइट, कि ये आपका राइट है हासिल करना। Human rights have moral and ethical connotation that invoke our conscience and obligation to act individually and collectively in dealing with issues of livelihood, hunger, poverty, health, education, housing, natural resources, right to water, land, clean air, etc., freedom of thought and expression, and so on. All action of community development practice must ensure that community members' human rights are not violated in the name of development. यानी हमें डेवलपमेंट के नाम के ऊपर लोगों के राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम पोल्यूशन की बात लेते हैं और हम कोई डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं तो हमें ये हक हासिल नहीं है कि हम डेवलपमेंट के नाम के ऊपर लोगों की जिस एयर में वो सांस ले रहे हैं उनकी उस हवा को polluted करें in the name of development or otherwise, but are in practice achieved and protected। बल्कि हमें, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उनकी उस एयर को पोल्यूट होने से बचाना है। हमें कोई ऐसा काम करना है कि क्लाइमेट चेंज ना हो। तो ये तमाम इंसानों का हक है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो हम इसमें ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं वो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस क्या है? सबसे पहले तो इसके मीनिंग्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। द रियलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पर्टिकुलरली फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, and access to education, health, and employment facilitate self-reliance on the part of individual and communities. Self-reliance, in turn, facilitate the realization of human rights. Self-reliance is a value, principle, philosophy, and a way of life. To explore the conceptual discussion on self-reliance, we must see different aspects of that particular community. In several dictionaries, the meaning of self-reliance is stated as a capacity or ability to rely on one's own capabilities, for example, power, resources, judgment, or ability to generate an outcome. यानी आपको जो कम्युनिटी है उसको अपने ऊपर एनहिसार करना है, अपने
अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के हल के लिए, अपनी अपलिफ्ट के लिए वो खुद अपनी मुश्किलों को सॉल्व करना चाहिए. And manage one's own affair. It also means autonomy and independence. Self-reliance is both mean as well as end. It means not being dependent on others for day-to-day living. Self-reliance is not limited to individuals but extends to families, communities and society. सेल्फ रिलायंस का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप पर एनएसआर करे. सेल्फ रिलायंस का मतलब ये भी है कि वो कम्युनिटीज़ अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने के लिए अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी मदद आपके तहत अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और अपनी ज़िंदगियों में, अपनी कम्युनिटी में बेहतरी लेकर आएँ. इट इज़ नॉट लिमिटेड टू प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन द इकोनॉमिक सेंस एंड इंक्लूड सोशल, political and cultural dimension in a comprehensive way. Self-reliance is also based on assumption that everything being equal, no individual and community should have to beg. कि किसी कम्युनिटी को किसी दूसरी कम्युनिटी से मांगना नहीं चाहिए. सब इस दुनिया में सब इक्वल हैं, तो सबके राइट्स एंड रिसोर्सेज भी इक्वल होने चाहिए. Be at the mercy of others or be dependent. सबको इंडिपेंडेंटली लाइफ गुजारने का हक है. On the contrary, everyone should lead a self-reliant and self-dignified life. Self-reliant communities are those that are able to produce and consume all goods, not just economic, according to their requirement, and to share surplus production with their communities. In this sense, self-reliance means individual and communities are not dependent on other for their day-to-day living. यानी वो अपने लिए sufficient जो है चीज़ें पैदा कर रही हैं, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, अपने लोगों की स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए सफिशेंटली जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्कि ना कि अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए वो दूसरी कम्युनिटीज़ की तरफ या दूसरे लोगों की तरफ देख रहे हैं. Such individual and communities enjoy the sense of self-respect, dignity, although that does not preclude them from the interdependency. जो लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं और अपने सेल्फ पे रिलाय करते हैं, वो कॉन्फिडेंट, वो कम्युनिटीज़ कॉन्फिडेंट होती हैं, वो कम्युनिटीज़ हैप्पी होती हैं. सो सेल्फ रिलायंस जो है ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है और ह्यूमन बेस्ड स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट कर सकते हैं. Thus, the whole purpose of community development is to make communities self-reliant and resilient so that they develop the capacity to meet their needs and effectively address the issue. So, पहली स्ट्रैटेजी जिसको आज हमने पढ़ा ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में, वो सेल्फ रिलायंस की स्ट्रैटेजी थी. अगले कुछ लेक्चर्स में हम और स्ट्रैटेजीज भी पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव के अंदर ही होंगी. थैंक यू वेरी मच.